Hi everyone, every news and every rumor can help us to make money in this market. So, few days back, we got the one rumor, and it was China has attacked on Taiwan. But that day, Nifty made the low but had recovered from the low. So वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो सब लोग इसे समझ पाएंगे. सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, चार्ट पे ऑलवेज फोकस करना है. सो ऑन 4 अगस्त अराउंड 11:15 और 11:30 वहाँ पे एक न्यूज़ आए थे कि मार्केट जो है इसमें ये हो सकता है कि चाइना जो है उसने ताइवान पे अटैक किया है. सो डेफिनेटली ट्रेडर्स हैव हैड कंसिडर्ड दैट न्यूज़ एज अ नेगेटिव. बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, नेवर सेल ऑन द न्यूज़. But now we can use that level as a support. So low of that day we can consider as a amazing support. So that low is 17161.25. Definitely we have lots of gap up also to get the support, but those are very far from current level. So definitely we need to take it closer from the current market price. So here this is one of the base low 17161. So we can consider as a लो ऑफ इवेंट कैंडल, यानी ऐसा दिन है जिस दिन रूमर आई थी या कोई इवेंट हुई थी. तो इवेंट यानी अभी तो कुछ पता ही नहीं है, वी आर नॉट कंफर्म कि चाइना ने ताइवान पे अटैक किया है कि नहीं. नो वन नोस, इवन चाइना वाले को भी पता नहीं होगा. बट यहाँ पे ट्रेडर्स जो होते हैं दे नो इन एडवांस एंड दे स्टार्ट टू शॉर्ट क्रिएट द शॉर्ट पोजिशन अकॉर्डिंग टू द न्यूज़. बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, नेवर शॉर्ट as per the news, always go with the chart. So this low can be the base support as per the current scenario. So above this level no need to worry, you can enjoy the bull run, but always go with the stock specific. Why we should go with the stock specific? Because market when market goes up, it is not necessary all stock goes up, because every stock has a different trend. Like I have my different story and everyone has a different story. The same way, it is not necessary when market goes up all stocks should go up. So definitely we should go with the stock specific approach. But right now all traders are talking about only China and Taiwan conflict. But as per the chart, this can be the base support level, right? 17161.25. So this way we can make the anything lucrative in this technical analysis world. So दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस.